Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13, which is energy and its resources, and today I will deliver its fifth lecture. So my dear students, today we are going to talk about uses of energy resources. As you know that in the previous lecture we have discussed about different energy resources, how they help us, and what do they provide us. So today we will discuss about their uses. So my dear students, let's quickly recap the previous lecture. For that you need to listen to the questions very carefully and then answer them. So quickly tell me, what do you know about the uses of energy that we get from coal? कोयले से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसका क्या क्या यूजेस है? Helps in cooking, generation of electricity, and it also generates heat. Very good. Now quickly tell me, what are the uses of energy that we get from petroleum? It helps to run the vehicles as fuel. It's the fuel of the cars and motorbikes around us, and it is also used to generate electricity, and so the petroleum is also very important. What are the uses of natural gas? So it is also used in vehicles, and it is used in generation of electricity, and it is also used in cooking and home. Maybe आप इसको cooking के लिए stoves में use करते हैं. So my dear students, this is coal, natural gas, and petroleum. So my dear students, now is the time for activity. Divide the students in two groups and assign a task to make charts. So first one will make a chart on sources of energy, renewable and non-renewable. So my dear students, पहला ग्रुप जो है, ग्रुप A जो है वो renewable और non-renewable resources के ऊपर एक चार्ट बनाएगा. Second group will make a chart on energy sources that they know. और सेकेंड ग्रुप जो है वो एनर्जी सोर्सेज जो हमने काफ़ी सारे पढ़े भी हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, उसके बारे में एक चार्ट बनाएगा. सो आई विल हेल्प यू आउट विद द पिक्चर्स. सो दिस इज द चार्ट, और इसमें डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिनको आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं. सो दिस विल बी डन बाय ग्रुप ए. सो पॉज द वीडियो एंड सेपरेट आउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द पिक्चर्स. Very good. Okay, now for group B, so you have to tell the energy sources. So coal, petroleum, electricity, these are different resources. Sun, these are different energy sources. Okay, my dear students, now in today's lesson we will discuss about the use of energy sources. So in today's lecture, students will be able to understand that sources of energy are used for many things: moving object, heating, lighting, transportation, electric appliances, etc. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Allah also wants to make it clear that He is the owner of the resources and to Him belong all things. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं. अल्लाह ताला कुदरत हासिल रखते हैं हर चीज़ को बनाने पे. जो वो चाहते हैं वो बना सकते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं इस दुनिया में वो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस. क्विकली टेल मी, व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में यूज़ होती है, कुकिंग में यूज़ होती है, हीटिंग के लिए यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होती हैं, डोमेस्टिकली आप इनको यूज़ करते हैं. सो एनर्जी के बहुत सारे यूजेस हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज़ द टाइम फॉर रीडिंग. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 124 इन योर GK 3 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So let's start reading. Uses of energy sources. Energy obtained from various sources serve different purpose. Some of them are to move objects. Energy is needed to move objects from one place to another. For example, to move a bus from one place to another, energy is needed which is obtained from the petrol. Energy for this purpose is mostly obtained from other sources such as coal, flowing water, solar power, etc. So my dear students, चीज़ों को move करने के लिए energy की ज़रूरत होती है, और जैसे कि आप नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करते हैं, एक बस को या गाड़ी को मूव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है.
इसके अलावा आप एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, जैसे कि कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, फ्लोइंग वाटर से, मूविंग विंड से. दे प्रोवाइड एनर्जी. So my dear students, next is heating. Energy also provides heat. So heating. Heating is required for cooking and warming, making steam, molding industrial objects, melting objects in industry. Heat energy is mostly obtained from coal, oil, gas and wood. So my dear students, heat जो है ये बहुत important होती है और heating के लिए भी energy को use किया जाता है. Coal, natural gas, wood, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी और डोमेस्टिकली भी. नेक्स्ट इज लाइटनिंग. आपको रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो लाइटनिंग नीड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, कोल, विंड पावर, ऑयल सोर्सेज एट्सेट्रा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजली जो है वो बहुत सी चीज़ों से बनती है, पानी से, हवा से, कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए रोशनी का बाइस बनती है. आपकी डिफरेंट अप्लायंसेस जो हैं ये उनको चलाने में आपकी मदद करते हैं. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली जनरेटेड बाय अदर एनर्जी सोर्सेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. Vehicles on the road as well as aeroplanes need energy to move. This energy is mostly obtained from petroleum products and natural gas. So my dear students, to travel from one place to another, you need transportation. And to move that transportation, energy is required. And where does that energy come from? It comes mainly from petroleum and natural gas. Next is electrical appliances. Electrical energy is required to run electrical appliances. Electrical energy is mostly obtained from hydropower. Alternative sources used to produce it are solar power, wind power and coal power. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजली के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको लाइटनिंग पढ़ाते हुए बताया था कि रोशनी के साथ साथ मुख्तलिफ जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, नॉट ओनली इन योर हाउसेज बल्कि आपके स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में जितनी भी अप्लाइंसेज हैं, दे नीड एनर्जी टू वर्क. एंड वेयर डज दैट एनर्जी कम फ्रॉम? दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं? दैट इज मेड फ्रॉम वाटर, जैसे कि पाकिस्तान में मोस्टली प्रोड्यूस होती है, कोल पावर से यूज होती है. इसके अलावा पेट्रोलियम, विंड पावर जो है, सोलर एनर्जी, दे ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी नीड एनर्जी. इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. आपको ये पेट्रोलियम से भी मिलती है, पानी से भी मिलती है, सूरज से भी मिलती है. इसके अलावा कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए वी नीड ऑल्सो एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम कोल and natural gas and wood and petroleum. And next is for lightning, we need electricity, and that electricity is generated from hydropowers, hydroelectricity, gas and wind energy, coal and petroleum. They all generate electricity. And for transportation, fuel is required. That mainly comes from petroleum and gas. And for your electrical appliances, electricity is required. And where does that electricity comes from? It comes from water energy, wind energy, coal energy, and also solar energy. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and your roll number and let's start. You will answer the questions. Which type of energy is needed to move objects? There are different energies which are needed, which help the objects to move. Write down their names. For what purpose heating is required? What are the sources of heat energy? For transportation, the energy is obtained from dash. What type of energy is needed for electrical appliances? And what are the sources of electrical energy? So my dear students, ये one line के answers हैं. You can also take help from your book and you can pause the video and reverse it and you can re-watch the video. So my dear students, pause the video, complete this worksheet and we will move forward. Very good. Now let's move forward towards evaluation. So my dear students, quickly answer the questions and list some of the uses of energy. Heating, lightning,
transportation. These are some uses of energy. Which form of energy is needed to move objects? It is petroleum, electricity, heat. They are all used to move objects. So what is the purpose of heat energy? It provides heating, it generates electricity. So these are some uses of heat energy. Next is, which form of energy is used to run domestic machinery and vehicles? Electricity is used for domestic machinery, and for vehicles, fuel is required. Okay, my dear students, now is time to note down your homework. For this, you will do the writing practice and you will answer question number 3 given on page number 128 and list some of the uses of energy. So अभी हमने काफी सारे energy के uses पढ़े हैं, आपको उनमें से कुछ जो है वो list down करने हैं. So this is your homework and now is the time for wrap up. So my dear students, in today's lecture we have learned that energy obtained from solar power, coal and flowing water is help to move objects. Coal, oil and gas are the sources of energy which helps in heating, cooking and warming. Water, coal, wind power are the source of energy for lighting, and transportation is due to natural gas and petroleum. Electrical appliances are run due to electrical energy, of which is a big source, whose source is hydropower. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture and you have learned different uses of energy. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.